तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, अपना नाम बताइए। हम शाउट आउट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका शाउट आउट मतलब आपका नाम लूँगा अगर आप अपना कमेंट इस वीडियो में देंगे कि आप कौन सी सिटी में हैं और क्या वहाँ पर प्लास्टिक बैन है भी या नहीं है, क्या आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। Hi friends, how are you doing today? Are you practicing and preparing for IELTS? Then this video is for you because in today's video I'm going to share one of the most important cue cards for IELTS. In the IELTS speaking exam, the IELTS examiner can ask you this cue card and you should be well prepared with a sample answer in your mind or at least an idea that you can share with the examiner. So let's quickly check out what the cue card is and the cues so that we can discuss what we can talk about and later share the sample answer. Describe a law in your country related to environmental protection. Well, the cues of this cue card can be what this law is, why it is enacted, what comes under it, and are you happy with this law or not. Well, you are watching YouTube channel RamanIelts Coaching and I'm your IELTS expert Mr. Raman saying if you have not subscribed this channel, what you're waiting for, do it right now. Press the bell button and do press the like button to motivate me to make more videos for you, and please share my videos with your other friends as well who are preparing for the IELTS exam. Let's quickly discuss what we can talk about, and I always have the discussion with the regional language Hindi and what we can talk about. तो बात हो रही है लॉ की रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट और टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है कि हमें इतना ज़्यादा या बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हम सिचुएशन को थोड़ा सा रिवाइव कर सकें। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, पॉल्यूशन ऑल टाइप ऑफ, चाहे नॉइज़ है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर एक चीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो यहाँ पर आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। आप चाहें तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिटी सेंटर में ऑड इवन या कुछ ऐसा लाया गया रूल जिससे ट्रैफिक को रिड्यूस किया गया है, या हम कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज़ को आउट ऑफ द सिटी एरिया मूव किया जा रहा है। डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आपको पता है मेरा स्टाइल के आई ऑलवेज़ कीप द थिंग सिंपल एंड ईजी, और ऐसा कुछ जनरल जो हर किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल रहे बोलना ड्यूरिंग द टेस्ट। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सेइंग नो टू द प्लास्टिक, दैट मीन्स अ कंप्लीट बैन ऑन द प्लास्टिक। हमारा ही कंट्री होगा जिसमें कंप्लीट बैन है, और हमारा ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर जगह पर प्लास्टिक मिलता है। हाँ, एक जगह डेफिनेटली है, शिमला में नहीं मिलता, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत बार मैंने विज़िट किया है और शिमला में एक पॉलीथीन बैग लेना इतना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर बड़ा सीरियसली लेके चलते हैं इसको। हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नए लॉज इनैक्ट करती रहती है और उन्हीं में से एक है द कंप्लीट बैन ऑन प्लास्टिक। क्योंकि क्या है कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसका जो एक मेजर प्रोपोर्शन है वो प्लास्टिक है। जितना भी हमें लैंडफिल साइट्स मतलब जहाँ पर कूड़ा वगैरह फेंका जाता है, साढ़े पंजाबी च रूड़ियाँ बोलते हैं, जिथे गंद पिया रहिंदा 24 घंटे, इत्थे यू नोटिस दैट प्राइमरली यू सी द प्लास्टिक। नाउ प्लास्टिक इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ruining द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। हमारी आसपास जितनी भी गंदगी है, स्ट्रीट्स पर, रोड्स पर, हर जगह पर आपको प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, वेफर बैग्स, हमेशा यही कुछ नज़र आता है। तो इस सारी चीज़ को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है ऑफ अ कंप्लीट बैन ऑन प्लास्टिक। अब इसके अंडर क्या आता है, तो हमेशा आपको ये बहुत सारे ट्रेनर्स आपको बताते होंगे, मुझे नहीं लगता कि कितना प्रैक्टिकल है बोलना कि कौन सी डेट को किया गया, कौन से स्टेट में, या कब किया गया, कौन से मिनिस्टर ने किया, इसका कम्स अंडर द लॉ नंबर कितना है। ये फालतू की बातें। ये तो जिस बच्चे ने आईएएस या आईपीएस का एग्ज़ाम देना है, मे बी उसके लिए फिर भी याद रखना ज़रूरी हो। हमें इन चीज़ों से क्या लेना, हम सिंपल जनरल सी बात करेंगे कि ये
हमारा रूल इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अंडर क्या है, कुछ भी हाइपोथेटिकल कि अगर कोई प्लास्टिक बैग यूज़ करता है तो उसे 5,000 की जो है फ़ाइन लगता है, अगर कोई शॉपकीपर रखता है तो इतना फ़ाइन लगता है। इनफैक्ट आपको पता नहीं है, शायद शिमला या हिमाचल में अगर आप यूज़ करते हैं प्लास्टिक बैग तो उसके लिए जेल की भी प्रोविज़न है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सोच के देखिए, समोसे लेने गए, लेके आ रहे हैं और आपको पकड़ के जेल में डाल दिया क्योंकि आपके हाथ में प्लास्टिक बैग था। कमाल की गवर्नमेंट है हमारी। एनीवे, तो ये चीज़ इतनी सिवियर है, इसकी पेनल्टी इतनी हार्श है, जिसकी वजह से पीपल हैव द फियर नाउ। अब उन्होंने प्लास्टिक को पूरी तरह से यूज़ करना छोड़ दिया है और ज़्यादातर लोग पेपर बैग्स या जूट बैग्स वगैरह जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं अपने लेके जाते हैं। एंड जिसकी वजह से अब ये जो अमाउंट ऑफ प्लास्टिक है, इसका जो वेस्ट है वो बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड soon the situation would further improve। और मुझे लगता है कि ऐसे और लॉज भी हैं जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आपने प्लास्टिक यूज़ करना छोड़ दिया है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, अपना नाम बताइए। हम शाउट आउट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका शाउट आउट मतलब आपका नाम लूँगा अगर आप अपना कमेंट इस वीडियो में देंगे कि आप कौन सी सिटी में हैं और क्या वहाँ पर प्लास्टिक बैन है भी या नहीं है, क्या आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। Well, that's pretty much all. You can also find the written answer of this particular cue card in the Speaking Booster, my electronic book that is available on IELTS coaching application. Anytime you can purchase it by downloading IELTS coaching application. By the end of this video, I will tell you how you can do that and purchase the Speaking Booster in less than 30 seconds. Let's quickly share the sample answer of this particular cue card. Well, the government of my country enacts various laws for the smooth functioning of the state. Here I would like to talk about a very important law that has been introduced lately to protect the environment. It is quite unfortunate to see that the environment is getting degraded day by day, and if not taken seriously, it will lead to dire consequences. The biggest challenge at present is plastic waste. The amount of solid waste is constantly increasing, and a major proportion of this waste is plastic. Millions of tons of plastic waste ends up in landfill sites day in and day out. Since it is non-biodegradable product, it stays there forever. At the same time, it releases toxins which are extremely harmful and often become a cause of birds and animal death that feed on landfill sites. To overcome this challenge, Government of India has completely banned the use of plastic bags. Now, if people go for shopping, they carry their own bags, usually jute bags, which are eco-friendly. Along with the ban, government also aware the general public to say no to plastic. In fact, plastic is also responsible for ruining the beauty of public areas like parks, bus stops, because plastic trash can be seen all around. But under this law, if someone get caught using plastic bag, has to pay 5,000 fine, and the shopkeepers who keep plastic bags have to pay 20,000 rupees fine. It is just because of this strict law and heavy penalty people have started avoiding plastic bags. It is resulting in a substantial decline in the amount of waste produced and keeping the environment clean and green. I hope there will be more laws that would be implemented to save the environment in future. Are you an IELTS aspirant? Are you living out of India? Are you looking forward to purchase IELTS Speaking Booster, the book containing the latest content of the IELTS Speaking exam that the examiner can ask you in any part of the world? This video will demonstrate how you can purchase Speaking Booster in less than 30 seconds that would be containing the latest content of the IELTS Speaking exam that the examiner can ask you during the IELTS exam no matter where you are. To purchase Speaking Booster, even if you are not living in India, you need to download IELTS coaching application on your Android phone. If you're an Apple user, please download ClassPLUS and enter the ORG code IELTS. To register on this application, you have to enter your email ID on which you will get the OTP, and once you register, you will see the home screen something like this.
click on Store at the bottom and then on Speaking Booster. At the bottom, you need to click on Buy Now, and once you click on it, it would prompt you to choose a state. Since you're not living in India, choose Others as it would reflect only Indian states. And once on the payment page, you can choose debit or credit card payment option. There are few wallet and other digital payment modes as well, like Google Pay if you use that. Otherwise, simply using your debit or credit card, you can make the payment. Although the price reflects in INR, that is Indian National Rupees, still you can make the payment and the amount would be converted automatically without charging anything additional. Now waste no time and purchase Speaking Booster. The direct link of Speaking Booster ebook is also available in the description of this video that you can click now.